अस्सलाम वालेकुम and welcome to Food for Foodies. आज हम खाओ सुए बना रहे हैं. This Burmese coconut-based noodle soup dish was introduced in Pakistan by the Myanmar community, but they cook it with yogurt instead of coconut milk. तो इस डिश में आप Burmese style खाओ सुए बनाना सीखेंगे for a near authentic experience. मगर ये creamy and flavorful noodle soup की रेसिपी देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक एंड शेयर करें and don't forget to press the bell icon. Let's get started.
हमारे खाओ सुई की करी एंड कॉन्डिमेंट्स रेडी हैं। हम फर्स्टली नूडल्स डिश आउट करेंगे और फिर कोकोनट करी पोर इन करेंगे। नेक्स्ट चिकन, पीनट्स, फ्राइड गार्लिक, अनियन, लेमन एंड अदर टॉपिंग्स ऐड करेंगे और टेस्ट टेस्ट करेंगे। Firstly, आप डिश का appetizing aroma experience करेंगे, and when you dig in, all the ingredients work together to offer an incredible eating experience full of different textures and flavors. Tangy lemon juice, creamy and spicy coconut curry, soft noodles, tender chicken, crunchy toppings like peanut, garlic, and others. My tips for this dish are to always use egg noodles because they soak up the curry and enhance the flavor. Coconut milk has a strong flavor, so gradually add it in the curry as per your taste, and make sure to keep the heat low when you pour it in and continuously whisk until it's completely integrated so that the milk doesn't curd. Although khao suey में cream use नहीं होती, I've used it because it adds a creamy richness in the curry and masks the gram flour's taste. आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट करें, इसको लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।